Okay, this is question number 89. Movements and social activists. You have to match the following. Chipko movement, Narmada Bachao Andolan, LGBT movement, and Telangana movement. On the other hand are the social activists, and their names are following. Okay, this is Akai Padmashali, Chaitalya Ilama, Medha Patkar या Medha Patkar, Bachni Devi. तो बताओ, what could be the answer as per you guys? 2 नंबर होगा, मतलब 2 होगा शायद, because नर्मदा is related to मेधा पटकर. तो बी का 3 है, वो तो इजी है ना. तो बी का 3. And ma'am, LGBT movement is Akai Padmashali. She is a transgender activist. ओके, तो दिस इज व्हाट बी का है 3. एक ही ऑप्शन में है बी का 3, दैट इज उसके अंदर ए का 4 दिया हुआ है, बच्चन देवी. LGBT मूवमेंट का सी का 1 है. ओके, अकाई पद्मशाली एंड तेलंगाना मूवमेंट इज चैतन्य इलामा. यही होगा, ठीक है. तो वी हैव डन तेलंगाना मूवमेंट नोट्स के अंदर, ठीक है. वी हैव डन चिपकू मूवमेंट, वी हैव डन नर्मदा बचाओ आंदोलन. बट हमने LGBT मूवमेंट के बारे में कभी स्पेसिफिकली कुछ नहीं पढ़ा, हमने ऊपर ऊपर से देखा है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से आते नहीं है ना. बट इफ यू गाइस वांट टू गो थ्रू दीज नेम्स, आई थिंक यू शुड, बिकॉज एक बार क्वेश्चन आ गए इनके ऊपर तो दोबारा भी आ सकता है. ऑलराइट, लेट्स जस्ट चेक द आंसर. दिस इज 068. हाँ, इसका 2 ही है, ठीक है. द आंसर इज 2. Next question. What are the common sampling methods in qualitative research? Qualitative, okay. Purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, all of the above. Without research methodology. किया है ना आप लोगों ने? रिसर्च वाली यूनिट खत्म कर ली ना, यूनिट 10. Can you guys hear me? मुझे confusion, मुझे रिवाइज देना है. I have little bit problem in research paper. उसमें कंफ्यूजन होती है. इफ यू हैव कंफ्यूजन इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है. लेकिन अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. एंड ऑल्सो वो वाले जो नोट्स है उसको आपको सप्लीमेंट करना है विद योर पेपर 1 के नोट्स, ठीक है. बिकॉज हमने फेमिनिस्ट रिसर्च को उसी के ऊपर बिल्ड किया है, राइट. बिकॉज ये दोनों में आता है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है. Ma'am, I'm also a bit like confused, but I know for sure snowball is for qualitative. If पर्पस I'm not wrong. पर्पस भी उसी में है. हाँ. आई थिंक कोटा भी उसी में है. Although I'm also not sure. Then it's all of the above. Is most probably all of the above only. 037. हाँ, इसका 4 ही है, ठीक है. All of these are Okay. research की methods. तो ये देख लेना, मतलब I don't need to explain this. I feel उसके अंदर because बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया हुआ है. What is purposive snowball, quota sampling and all. देखो, the thing is कि अगर आप सीरियसली करते हो ना तो एग्जाम उतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है. अटल सत्य ये है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है ना तो इट इज नॉट दैट टफ, ठीक है. ये लग जाता है टफ जब हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की होती या पढ़ाई की होती है तो रिवीजन नहीं की होती, उसके बाद एग्जाम में जाकर के टफ लगता है. बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिंसेरिटी के साथ किया है ना, आई थिंक 75-76 क्वेश्चन ठीक करना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है. अब आई नो ऐसी चीजें बोलनी बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती है, बिकॉज आई एम ऑन द अदर एंड ऑफ इट. आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम, बट because I've cleared the exam, that is why I can say this ना, because I've gone through that process. So I can tell you, अगर आपने 2 महीने भी अच्छे से पढ़ाई करी है, there is nothing stopping you from clearing this exam. Alright, I know competition बहुत है, 3-4 सीटें ही है JRF की, लेकिन आप ये भी देखो ना कि बच्चे भी तो कम है सब्जेक्ट के अंदर. बट बात वही हो जाती है, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर अगर बच्चे ज्यादा हैं तो JRF की सीट्स भी 50-50 बनती है वहाँ पे. सो बात वही हो जाती है, लेकिन स्टिल ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो हो जाएगा. ओके, तो और हाँ, जो मेन पॉइंट था वो ये था कि डू रिवाइज व्हाटएवर यू हैव स्टडीड.
चाहे कुछ नया मत पढ़ो लास्ट के दिनों के अंदर, बट डू रिवाइज जो कुछ भी आपने किया हुआ है। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तभी होती है जब हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया होता। मुझे भी इसलिए कंफ्यूजन हो रही है ना, बिकॉज मैंने भी 1 साल पहले की चीजें पढ़ी हुई है। राइट। तो इसी वजह से, since I also cannot remember this stuff, that is why it is very very important for all of us to revise things. ठीक है, time and again, because our memory is very feeble. Right. What is this question number 91? Okay, यहाँ पे आ गया आपके comprehension. This is about epistemology, feminist empiricism, feminist standpoint. Okay. Ma'am, are we going to do the passage? Do you want to? If you want, we can. बताओ. I mean, we do have the time. I don't mind. But we have to do the current affairs too, na yaar. Chalo, let's do one thing. You guys read it, and I will also read along with you guys, and then we can solve the questions together, because that is the only way of doing it, right? Okay, ma'am. करंट अफेयर्स करने के बाद कर सकते हैं क्या ये? कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी 15-20 मिनट ही लगेंगे इसमें, फिर दोबारा दोबारा वरना ये क्वेश्चन पेपर खोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लैपटॉप इतना स्लो है। Yeah. 5 ही हैं कि 10 आए हैं, कितने आए हैं? Hmm. 10 questions. So 2 पैराग्राफ है. Let's start with the first one. Okay, so I'll also read it and you guys also read it together. Okay. Ma'am, is the same passage being repeated 3 times? It's 5 times. We have 5 questions now. So they just give it to you all over. All right. Okay, ma'am. So 1 paragraph and 5 questions. 2 paragraph, 10 questions. Okay. That's how it's done. Okay, all right. Ma'am, I'm not done by it. Okay. Okay.
Anji, are you guys done? Oh yeah, ma'am. What about you, Sneha? मैम पढ़ लिया है. Okay. All right, then let's try and solve these questions. ये से है ना? Okay, question number 1. Assertion and reason. Previously universally applicable scientific methodologies and transcendental truths seem to be inclusive now, bore the imprints of gender, class, race, and culture. Seemed to be inclusive now, bore the imprints of gender, class, race, and culture. Reason. Feminist thinkers have examined how gender symbolism, social division of labor, and individual gender identity have influenced the history and philosophy of science. Both are true. A is the correct explanation of A. Both are true. R is not the correct explanation of A. A is true. R is false. A is false. R is true. बताइए. I think काफी direct question है. Ma'am, it's one. What? Ma'am, I think it's one. Okay. Sneha. I'm a little confused because in the last line it says that the criticism has already enhanced the understanding of centrism in science. And this line says that it seems to have an inclusive now because it imprints gender, class, race, and culture. So मुझे interesting लग रहा था तो is I'm a little confused. देखो यहाँ से पढ़ते हैं ना. कहाँ था ये? The analysis of how gender symbolism, social division of labor by gender, and the construction of individual gender identity have affected the history and philosophy of science. ये तो डायरेक्ट ही है. उन्होंने आपको स्टेटमेंट दे दी है, राइट? लेकिन अब उन्होंने किया क्या है कि उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किस चीज का रीजन हो सकता है ना? तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग फॉर यू गाइस, मैं दूसरे बच्चों के लिए समझा रही हूँ बिकॉज वो लोग भी रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे ना. तो previously universally applicable scientific methodologies and transcendental truths. ठीक है, previously universally applicable यानी कि किस चीज की बात करी जा रही है यहाँ पे, जो साइंसेस के अंदर ऑब्जेक्टिविटी के लिए दौड़ भाग होती थी. अगर आप लोगों ने इस क्लास की मतलब आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं ऐप के ऊपर, तो यू विल नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. बिकॉज हम लोगों ने यही जो ये पैराग्राफ बोल रहे हैं, ये हम लोगों ने वहां पे डेप्थ में कवर किया था. किस तरह से फेमिनिस्ट जो स्टडीज है या फेमिनिस्ट क्रिटिक है या जो फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी है, उसने किस तरह से सोशल साइंसेस को या बाकी सब्जेक्ट्स को चैलेंज किया. ये क्लास खत्म हो गई, एक बार दोबारा आ जाओ प्लीज.